Concepts of attachment and engagement. The writers of this article define very clearly what do they mean by attachment and engagement. Attachment ko they are looking at as an affective component that is related to one's feeling of well-being, यानी इसका ताल्लुक emotion से है और it leads to a feeling of well-being. और फिर उन्होंने देखा इसको measure किया in terms of their embeddedness in school community. उन्होंने इंडिकेटर ये रखा कि ये बच्चे कितना स्कूल में कंफर्टेबल हैं और कितना इमोशनली उसमें सेटल नहीं हैं. Then the concept of engagement they looked at from the perspective of participation. उसमें इन्होंने ये 4 चीज़ें देखी. उन्होंने देखा कि बच्चे काम कितना कंप्लीट करते हैं, कितना क्लास में अटेंशन देते हैं, and how much do they participate in discussions, and then how much do they participate in co-curricular activities. तो ये उन्होंने participatory या engagement से related ये indicators जहन में रखे. So both of these things, as you would realize, are very important in a schooling context, because when you want your child to excel या बच्चों को excel की educational achievement बेहतर करना चाहते हो, so you want the children, yes, of course, to be emotionally attached or to feel good in the schools, because if they feel good in the schools, they'll be ready to come to the school, and also to engage in the school, that is to be participate fully in the school environment. क्योंकि ख्याल रखिएगा, हम फिर से वही बात करेंगे कि नॉलेज जो होता है वो को-कंस्ट्रक्टेड होता है. ऐसा नहीं होता कि टीचर ने जो कुछ कह दिया और वो अगले के जहन पे नक्श होकर रह गया. नहीं, स्टूडेंट्स एज एजेंट्स हैविंग एजेंसी, अपने जहन में उनकी एक विल पावर होती है, वो उस पर एक्ट करते हैं. एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड ओनली, देन दे प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग टू देम, एंड देन दिस इज हाउ knowledge is created. So these writers make a distinction between affective and behavioral aspects. Affective आपके आगे आपकी sense of attachment में, और behavioral आपके आगे sense of engagement में. लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि there are other researchers who don't make this distinction. So जो भी different ये जिस तरह से explain कर रहे हैं, they are only giving you a framework to understand the research that they conducted. So they might like to study these two things separately. However, please keep in mind that engagement and attachment are interlinked. ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं हैं. One leads to the other, and they are connected to educational achievement.